And I'll be asking you a few questions regarding to your movie and regarding to Mami Film Festival. So, firstly, sir, I know it's a big day for you. Tell us something about your movie Agra, which was on released on like Cannes also, and now it will be telecast on Mami Film Festival. So, sir, how excited are you for this movie? I'm very excited. Yeah, the premiere was yesterday, and it was a really reaffirming experience because I mean it was a packed house, and the audiences, having seen the film yesterday for the first time with an Indian audience, I just cherished that experience because originally when I had started writing this film, whenever you make any film, it's a film for the Indian audiences. ये हमारी फिल्म है, हमारे लिए ये है. So to be able to see that so many people were interested in the film and then really connected with the film and had many things to say about the film was really exciting for me. The fact that the film is starting some sort of a conversation around the idea of sexual repression and the idea of sexuality, which is what I had intended to do originally with the film, is amazing, and I feel blessed that the film is at Mami this year, and it's starting hopefully a longer process where the film is able to come out on a public platform and a lot more people are able to see it. When I was reading, personally, I feel like it was a great story. What motivate you to write this kind of story? Because particularly when we choose this kind of topic, there are so many things that comes out. What motivate you to write down this story? So, Can after you hold the black one mic, which is on center? Yes. After Titli, I had been thinking about what I wanted to do next and what it was that I was feeling really strongly about. And I realized that I myself, as a young boy growing up in Delhi, in different parts of North India, had felt a certain sexual repression myself. And I had not been able to express myself in ways that I would have liked to, and that bothered me. And what bothered me even more was that this time that I'm talking about, from when I was about 16, 17 to even, let's say, when I was about 25, 26, because in India men mature sexually so much more later, that in that phase, it was not just me. I had seen so many other boys around me who had gone through the same thing, and I felt like there was something universal there, which was not spoken about, which was not addressed, and yeah, that became the central impulse. I felt really strongly that this film needed to be made, and some of the things around it needed to be said. And from there, it was just then a process of finding what the film is really trying to say. और वो करते 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 draft after draft after draft, the film started slowly revealing itself to us, and yeah, and then it began its own journey from there. हेलो हाय सर, दिस इज श्वेता। हम बात करते हैं, जैसे अगर आपकी तितली की बात करें तो काफ़ी हिट रही है फिल्म। अगर हम आगरा की बात करते हैं तो जिस तरह के आपके स्क्रिप्ट राइटिंग होती है तो कितनी चैलेंजिंग हो जाती है एक राइटर के लिए कि ये ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, ऑडियंस से कनेक्ट होने चाहिए, दिस एंड दैट। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी फिल्म की सबसे पहली ऑडियंस आप खुद होते हो, और मुझे लगता है कि हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म को पहले ऑडियंस की तरह ही देखता है, और आ, वो इसी फेथ के साथ, इसी विश्वास के साथ फिल्म बना सकता है कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं ये फिल्म देखना चाहता हूँ, तो मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं बाहर जो ये फिल्म देखना चाहते हैं। तो जब आप कोई कहानी या कोई थीम के बारे में बात करना शुरू करते हैं, या सोचते हैं उसके बारे में बात करना चाहेंगे आप, ऐसा आपको लगना शुरू होता है, और आपको खुद से ये जवाब मिलता है कि हाँ, मैं एज एन ऑडियंस ये फिल्म देखना चाहता हूँ, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। मुझे नहीं लगता उसके बाद आप किसी और ऑडियंस के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कोई और कैसे सोच रहा है वो वैसे भी सेकंड गेसिंग ही है। आपको नहीं पता कि कोई ऑडियंस क्या चाहती है।
और अगर हम ऑडियंसेस को सोच के और रिसेप्शन को सोच के फिल्में लिखने लग जाएंगे, बनाने लग जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा कुकी कटर हो जाएगा। फिर आप अपनी इम्पल्स भी छोड़ दीजिए। कई बार फिल्म मेकर को अपनी खुद की इम्पल्स भी नहीं पता होती है। कई बार आपके अंदर कहीं छुपा होता है रियली जो आप एक्चुअली कहना चाह रहे हैं। सब कुछ आपको भी नहीं पता होता अपनी फिल्म के बारे में, बनाते बनाते पता चलता है। तो जो चीज़ आपको भी नहीं पता वो किसी और को कैसे पता हो सकती है? और अगर किसी और को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो यू जस्ट हैव टू राइड योर इम्पल्स। आपको जो फील हो रहा है आपको वहीं से फिल्म बनाना चाहिए। सर इससे पहले हमने एक छोटा सा क्लिप देखा था, कैम में रिलीज किया गया, दिखाया गया था ऑडियंस को। ऑडियंस ने 5 मिनट्स स्टैंडिंग क्लैपिंग किया था। सो आप एज अ इंडियन ऑडियंस से क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह? देखिए, मैं इंडियन ऑडियंसेस से मेरा एक ही एक्सपेक्टेशन है, और वो कोई अलग एक्सपेक्टेशन नहीं है। इस फिल्म को लेके मैं कोई भी फिल्म बनाता हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि वो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करे। जो भी थीम है उस फिल्म का, उसके अराउंड देयर शुड बी अ कॉन्वर्सेशन दैट नीड्स टू बी स्टार्टेड। मुझे नहीं लगता मुझे किसी भी इशू या खुद अपनी फिल्म के बारे में सब कुछ पता होता है। मेरी कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ आर्टिकुलेशंस हैं, उनको साथ जोड़ के कुछ सीन्स के ज़रिए, कुछ कैरेक्टर्स के ज़रिए, कुछ फीलिंग्स के ज़रिए एक फिल्म बनती है जो कुछ कहना चाह रही है या बहुत कुछ कहना चाह रही है। कुछ इधर से भी कहना चाह रही है, कुछ उधर से भी कहना चाह रही है। इट इज़ इंटेंडिंग टू बी nuanced enough so that whenever an audience gets to see it, when people at large get to see it, they can find an in into the film from who they are. The film is not a closed piece of conversation. The film is what it is, and then my goal is always to uh, maintain different ins into the film so that you can watch it in your own way, he can watch it in your own way, in his own way. There are different people who can watch it in their own way, interpret it the way they want to, and start a conversation and talk about it, because that's what we really need to do. Cinema at the end of the day needs to be uh, uh, yeah, just making people connect with each other. Sir, one last question. Tell us something about, as a journalist, I can see so many filmmakers from the different countries. So tell us something about Mami Film Festival. How it is a beautiful film festival where I can express, where different makers can express themselves from the different country. Yeah, I mean, Mami is probably right now, along with a couple of other festivals, one of the premier platforms in the country to have your film showcase. So it is a really exciting, really beautiful platform, and it is now coupled with the whole South Asian accent. This year, I think the festival is just growing and becoming bigger and bigger, and garnering more and more equity each year, both for itself and for the filmmakers that are involved with the festival, that are showing their film at this festival. So yeah, more power to Mami. I think it's a really really exciting film festival, which I hope goes from strength to strength with every passing year. Thank you so much, sir. Thank you Thank so you. much for your time. Thank you. थैंक यू। डन गाइस। हाँ डन। थोड़ा पीछे। चालू क्या? Yeah, please. चलो. थैंक यू। Thank you. Yeah, it's a platform where there are so many screenings going on. Tell us something you have here about the stolen, right? Correct me if I'm wrong. Tell us about the movie and about the Mumbai Film Festival. I think when I came to Bombay, Mami was the festival which I used to attend every year because फिल्में देखने को मिलती थी, और सबसे बड़ी बात है कि आई थिंक ऐसे फिल्म मेकर से रूबरू होने को मिलता था जो शायद अपनी करियर की शुरुआत कर रहे हैं, और मैं भी एक एक्टर के तौर पे अपने करियर की शुरुआत कर रहा था। तो आई थिंक उन शुरुआती दौरों में ऐसे लोगों से जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट था
who are the future of cinema, and probably that's why I've been working with a lot of first-time filmmakers. So I think for an actor to evolve, Right. for any kind of artist to evolve in cinema, this is the space. क्योंकि यहाँ पे आप बिना बॉक्स ऑफिस प्रेशर के एक अपनी कहानी का एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आपका वो प्योरेस्ट फॉर्म में है. सो आई थिंक दैट इज़ वाई इट स्पेशल, एंड ऑल्सो इट ऑल्सो गिव्स बर्थ टू अ लॉट ऑफ न्यू टैलेंट्स. Right. तो हमेशा नए एक्टर्स निकल के आते हैं, नए डायरेक्टर्स निकल के आते हैं. आई थिंक फिल्म मेकर्स का निकलना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा हो सके, जितना टैलेंट ज़्यादा आ सके. तो आई थिंक वो होता है इस फेस्टिवल से. सो आई थिंक it's a great cultural movement for cinema. Yes. And I think we should all celebrate it and appreciate it and attend it. आपके करियर की अगर हम बात करें, इतने सारे डिफरेंट रोल, लास्ट अगर मैं बात करूँ आखिरी सर्च में, एक ऐसा किरदार विच इज़ वेरी हार्ड एंड हथौड़ा वाला किरदार, तो नो बडी कैन फॉरगेट इट. टेल अस समथिंग, व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, हैव यू एवर थॉट कि आई हैव टू डू सो मेनी डिफरेंट रोल्स इन माई करियर? I think the most tough character till date has been stolen. ओके. गौतम बंसल, चाहे मैंने हथौड़ा त्यागी किया हो, चाहे मैंने आखिरी सच किया हो, मुझे लगता है उन कैरेक्टर्स में सपोर्ट था राइटिंग का, इस कैरेक्टर में भी सपोर्ट था. बट देन द थिंग इज दैट आर्क, व्हेन यू हैव अ बिग आर्क, दैट इज़ व्हाट यू लुकिंग एट. और मैं जब भी कोई कैरेक्टर ढूंढ रहा होता हूँ तो मैं ये ढूंढ रहा होता हूँ कि उस कैरेक्टर की जर्नी क्या होगी. मुझे सिर्फ छाप नहीं चाहिए कि अरे ये बंदा यहाँ का है, वो बंदा जहाँ कर भी हो, लेकिन उसके साथ होता क्या है. यही सवाल हम अपने आप से पूछते रहते हैं, हमारे साथ क्या होगा. तो आई थिंक वो रिलेटिबिलिटी फैक्टर जुड़ जाती है. मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में समझा रहा हूँ, आई डोंट नो इफ दैट इज बट या आई थिंक दैट्स व्हाट आई एंजॉय अबाउट एक्टिंग, कि अलग अलग लोग जीने का मौका मिल जाता है बिना कोई पाप किए. राइट. विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर? Right now it's Gautam Bansal from Stolen, but of course I have to give it to Stree Jana and Hathoda Tyagi. Okay. Any season 2 coming up from your side? Any? Rana Naidu 2 is coming up, and Apurva is coming on Hotstar. Okay. And next year I have 3 theatrical releases. So I'm Rana excited. Naidu, anything like I have seen Rana Naidu. Yes. It's a great series. Thank you, thank you. What will be your character? I don't know. I think I'm in for a surprise because अभी स्क्रिप्ट भेजेंगे तो मैं Okay. पढ़ना शुरू करूँगा, तो I hopefully कुछ अलग wacky track होगा. Okay. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you sir. लाओ मैं फोटो मारता हूँ. मैं तो फ्लैश बंद કરીને મારજો. अरे क्या हो गया? मैम सेंटर लुक. दो सेकेंड. मैम लोग क्या हो गया. मैम सेंटर लुक. उसका डन हो गया, आपके बाजू वाले का. रुक जा. लाइट ऑन करो भाई. हाइटेड आहे. जाऊ चलो वरती पकड़. डन. आगे आ जाए. Okay, ma'am. Firstly, the title looks very amazing. Yeah. Tell us something about your character and about the title. When you got to know about the title, what was your reaction first? Well, Rajat approached me with this, and I love his cinema. I had watched Aankho Dekhi, and it's been my favorite for a very long time. So I was really fortunate to, to be approached by Rajat to do this, and it's a who done it. तो हाँ देखना पड़ेगा आगे क्या होता है, because obviously there is a death. Obviously we don't know who it is, and there are many suspects. So it's interesting, and the way it's shot is beautiful. मैम
ओके, सो मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपकी फिल्म में काफ़ी थ्रिलर एंड सस्पेंस भरी है, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये रोल स्क्रीन पे प्ले करना? एक्चुअली जितना चैलेंजिंग रोल होता है उतना मज़ा मुझे आता है. आई मीन एनी आर्टिस्ट वुड लव टू प्ले चैलेंजिंग रोल. सो ये actually hatke, it's very different from what I've done. They're all fantastic theatre actors, stalwarts in what they do. So yeah, it was a little intimidating to get into a room. Sab log, they know each other, so they're friends, they've worked together before, theatre karte hain, or I come from a completely different background. So it was a lot of fun. It was challenging, but the whole crew are just fun loving people, so it was a good time shooting. Yes, ma'am, talking about your career project, when we talk about Escape Life, Tanav, and there are so many other projects is there, always different from different projects. What is the one thing that you notice when the first script comes to you? The first thing, I'll tell you, so everything is very different from each other, and इतना भी planning नहीं है. हाँ, तनाव के पीछे बहुत planning था, because I wanted to show the simple side to me. As far as this is concerned, again, I wanted to show the actor in me and those skills. To hold your own in a room of 20 other actors in a frame is not very easy. So for the most part, there is a little thinking behind it, but then again, जब काम आता है तो भगवान से थैंक यू वेरी मच बोल के मैं कर देती हूँ. Tell us something about Mami Film Festival. Screening होने वाली है. Excitement तो रहती है. Yeah. When you shoot, it's a different thing. When you see your project, it's a different thing. So I'm going to watch it on the big screen today for the first time. I have not watched through the edits, कुछ नहीं देखा है. So I'm very excited to sit with the crew and finally watch, the final product. And of course, fantastic festival to be associated with, Mami Film Festival. We're very happy that our film was selected and chosen, and people are going to come and watch it. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.